أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Yes, anybody wants to say the thought of the day? Ma'am, can I? Yeah. Yes, beta. Yes, Insha, go ahead. Mistakes prove mistakes are mistakes prove that you are trying. Mistakes open your mind. Cannot hear you properly. Mistakes are proof that you are trying. Mistakes are a proof that you are trying. Mistakes open your mind. मतलब गलती करोगे तो उससे ये प्रूव होगा कि एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया. जिसने ट्राई ही नहीं किया होगा वो गलती कैसे करेगा, है ना? Understood? Understood or not? जिसने ट्राई ही नहीं किया होगा उससे गलती कैसे हो सकती है? कैन यू हियर मी बेटा? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो. Yes. हेलो, कैन यू आंसर मी? Yes, ma'am. कैन यू हियर मी बेटा? हाय या ना Yes, बोलो. ma'am. ओके. Tomorrow you have science paper, no? Yes. Tomorrow you have Yes. science paper, right? Yes. What you want to do? You want to revise? Yes, Huh? ma'am. Okay, let's do the revision. Chalo. Start reading this one by one and then I will ask you, okay? Who wants to read? Ma'am, can I? Yes, Nisha. Okay. Ma'am, 5 तक 1 to 5. Fill in the blanks with the correct words. The seed coat has dash for water to enter and help a tiny hole. At the seed germinate a tiny holes. Number 2, to ensure that plants do not grow too close to one another, some plants dash mm, scatter their seeds far away. Roots of dash can grow into new plants. Dahlia.
Manure and fertilizers add dash to the soil. Nutrient Cro- crops grown for June to October are known as crop Kharif crop. crops. Okay. The seed coat has a tiny hole for water to enter and help the seed to germinate. सीड कोट है वो सीड के ऊपर होता है. ठीक है. Okay. See, this is a seed and this would be the seed coat. Okay. So there will be a tiny hole to for water to enter the seed. Okay. So that the seed can germinate. Understood? Is it clear with everybody? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now the next question is to ensure that plants do not grow too close to each other, some plants dash, that is, some plants may scatter their seeds far away. They will scatter their seeds. They will throw their seeds from the parent plant a little far from them so that the seeds do not grow close to each other. Is this clear? Can you tell me the ways of dispersal? What are the ways of dispersal? Dispersal by Dispersal animals, by wind, dispersal by dispersal by water, water, dispersal dispersal by by wind. animals, dispersal by explosion. Dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals, and dispersal by explosion. Please read this, Chalo. Who wants to read? Insha Bohra. Insha Bohra. Yes, ma'am. Start Yes, reading. ma'am. First one, Dispersal, beta. okay. Dispersed by animal, the process by which seeds are scattered away from the parent plant is called dispersal. Some ways of seed dispersals are given below. Dispersal by wind. Seeds of certain plants are very light and heavy wings like structures or hair on them. These seeds are easily carried away by the wind from one place to another. Examples are maple and dandelion seeds. Dispersal by water. Seeds of plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering, which helps them to float on water. Water carries these seeds from one place to another. Ma'am, can I read Keshwani Ma'am, Fatima? can I read Bodiwala Mariam? Yes. Yes, Mariam Bodiwala. Keshwani Dispersal Fatima, can I read? by Dispersal by animals. Seeds of some plants, such as cockleaber, have spines or hooks. These seeds stick to the bodies of animals and birds and are thus carried away from the parent plant. Birds and animals eat fruits of various plants. Undigested seeds
of these fruits pass through the digestive system in And intact intact. and are dispersed to other areas. Dispersal by explosion. The fruits of some plants, such as peas and beans, burst open when they are ripe, scattering the seeds in all directions. This method of seed dispersal is called explosion. Very good. Ma'am, now read Um, Keshwani Fatima. Keshwani Fatima, please. Keshwani Fatima, please explain disposal by wind and water. Yes, ma'am. है ना, डिस्पर्सल बाय विंड यानी ये होता है seed of certain plants and very light and have wing like sketchers or hair on them. These seeds are easily carried away by the wind from one place to another. और ये जो है ना, wing like sketchers, some seeds, वो मैपल सीड है, वो डिस्पर्सल बाय विंड है कि जब भी जो स्कैटन प्लांट्स होते हैं ना, मैपल स्कैटर प्लांट्स होते हैं ना, वो है ना बहुत लाइट होते हैं और उसको और स्कैटर उसके ऊपर होती है और और उसके उसके ऊपर क्या ऊपर, होता है? हाँ, और वो बहुत लाइट होता है और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर वो हेयर होते हैं। हेयर होते हैं। उसकी हेल्प से वो विंड के साथ उड़ सकते हैं। हाँ, और यहाँ यस पे और नो? यस, और यहाँ पे वो पिक्चर भी दिएला है, उसके हेयर है। फिर डिस्पोजल बाय वाटर। वो सीधे ना इजीली जो है वो कैरी हो जाती है और उससे से वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, इसलिए उसको हेयर है। और ये एग्जाम्पल है मैपल सीड का। फिर डिस्पर्सल बाय वाटर। Seeds of plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering which helps them to float on water. Water carries these seeds from one place to another. यानी क्या है ना, जो प्लांट, जो सीड ऑफ प्लांट होते हैं ना, सीड में से जो प्लांट उगते हैं ना, वो है लोटस और कोकोनट। वो है ना एक स्पॉन्जी फिब्रियोस कवरिंग से होता है जो काम आता है बेटा योर फ्यूचर में। वॉइस इज कटिंग बेटा। हम अभी आ रहा है, हाँ बेटा। वो है ना फ्लोट, फ्लोट ऑन वाटर में हमारे काम आते हैं। और वो वाटर कैरीज कैरीज करते हैं सीड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए। हम्म। ओके। बलोच मीसा, यस मैम। can you explain dispersal by wind and water? ओके मैम। Okay. Then Nayani Sakina will explain. चलो। चलो। Dispersal by water. Seeds of plants such as lotus and coconut are pon- spongy, have Spongy. a
spongy or have a fibrous covering. Means seeds or plants such as us जो seeds plants होते हैं ना such as lotus and coconut are pongin. The lotus or coconut pongi है ना हम्म और have fibers and covering वो फाइबर्स जैसे होते हैं और कवरिंग मीन्स ढके हुए होते हैं which helps them to float on water helps them float helps them to float on water means help help है ना मदद to float float and water है ना हम्म water उसको carries हेल्प the करते हैं sea फ्लोट करने के लिए। वो फ्लोट करने के लिए water carries the seed from one place to another water carries the seeds then वो one place से another place से जगह जाते हैं ओके बेटा, नया नहीं सीख लिया। यस मैम आप ही बोल रहे थे बेटा। यस ओके, तो पहले मैंने किसको बोला था बोलने के लिए? मैम पहले आपने मीजा बलूच को बोला था। ओके, पठान जहरा बानो। यस मैम। Hi beta, can you explain disposal by wind and water? Seeds of plant such as lotus and coconut are Wind और water दोनों, हाँ बेटा? Yes, go ahead. मैम कैन आई रीड मलाडा आयशा? I want you to explain, Aisha. Can you explain wind and यस water? मैम। यस मैम। Okay, go ahead. Dispersal by water. Seeds of plants such as lotus and coconut are spongy or heavy of fiber covering which help them to float on water. Seed such seed plant का जो होता है such as lotus and coconut वो वो ना स्पॉन्जी होते हैं एंड Okay, फाइबर कवरिंग okay, कौन बेटा. हेल्प करता है उसको फ्लोट करने में Hmm. Okay, चलो. Learn these five fill in the blanks and then we'll move ahead. Okay, ये five fill in the blanks learn कर लो जल्दी जल्दी और फिर हम आगे बढ़ते हैं. लर्न करने की है ना हाँ, learn कर लो बेटा. I'm giving you 2 minutes. जल्दी जल्दी से learn कर लो, ठीक है? यस
मैम ये क्या लिखा है? व्हाट बेटा? कौन सा ये ब्लैंक? नंबर 3 का आंसर। दहालिया, DAHLIA, दहालिया। ओके मैम। मैम डन। मैम आई हैव लर्न मोदी वाला मरियम। ओके बेटा। I have learned Saima. Ma'am, I have learned Balasnisa. मैम मेरा बुशरा का हो गया। मलका ने कादर की आईडी में बुशरा और मलका ने फातिमा दोनों है। ओके। Ma'am, I मलका ने have बुशरा और learned. मलका ने फातिमा। Ma'am, I have learned Keshwa and डन। Fatima. मैम डन वाला डायशन। I have learned Keshwa and Fatima. गुड बेटा, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। Okay, let's move on to true or false. Who wants to read? मैम नहीं। Ma'am, can I Keshwa and Fatima? Somebody else, मैम please. राजा ने निदा फातिमा। मैम राजा ने बहुत। Yes, Rachani Nida. ओके मैम। 1. A young seedling gets its food from the cotyledons. True. All seeds need air, water, and warmth to germinate into seedling. True. A maple seed is dispersed by explosion. False. Carrots store extra food in their stems. False. Farmers use scarecrows to keep birds away from the fields. True. All seeds need air, water, warmth to germination into seedling. True. Okay, learn everybody. Come on. A young seedling gets its food from cotyledons. This statement is true. Is the Cotyledons. So what is the definition of cotyledons? carrot story. What is the definition of cotyledons, beta? What, ma'am? What is the definition of cotyledons? Here is the definition of cotyledons. Come on, learn it first. First, learn the definition of cotyledon. Seed leaves or cotyledons store food for the baby plant. And what is cotyledon? Cotyledon means जो सीड का अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वो। Cotyledons store food. Seed leaves. Seed leaves और cotyledons जो सीड के अंदर जो छोटा सा लीफ दिया हुआ है ना यहाँ पे, that is यस। cotyledon बेटा. This is cotyledon. Okay. ओके Seed मैम। leaves or cotyledons store food for the baby plant. प्लांट। मैंने आपको cotyledon की डेफिनेशन भी लिखाई है, देख लो एक बार. यस मैम।
Okay, understood what is cotyledon? Yes, ma'am. See, now all seeds need air, water, and warmth to germinate into seedlings. All seeds are going to need air, water, and warmth to germinate into seedlings. The statement is true. A maple seed is dispersed by explosion. Maple seed explosion से disperse होता है. False. Disperse होता है. A maple seed dispersed by wind. Very good, very good. Carrots store extra food in their stems. Is the statement correct? No, ma'am. False. False. Then किस कहाँ store होता है? Baby Cotyledon. plant. If maple see carrots will store their food in stems. Baby plant में थोड़ी store करते हैं food carrot. Carrot कौन सी चीज है? It is which part Root. of the plant? Root. Root part. So carrots store their extra food in their roots. Okay. Okay, ma'am. Farmers use scarecrow to keep the birds away from the fields. This statement is True. true. Okay. Now, everybody, all of you, listen to me. I have asked you question, and the question is do as directed. तो do as directed में कुछ नहीं होता, उसमें मैं fill in the blanks पूछ रही हूँ, फिर ट्रू और फॉल्स है, fill in the blanks है, वही सब चीज है, ठीक है? इसलिए वो सेंटेंस देख के डर मत जाना कि ये मैम ने क्या पूछ लिया. ओके. 1 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये सारे हैं, fill in the Yes. blanks है, ट्रू और फॉल्स है. ओके, यही पूछा है मैंने. ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने क्या पूछ लिया. ओके. मैम कल है साइंस का पेपर. हाँ जी, कल है साइंस का पेपर. ओके, आप सब रेडी हो ना? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. ओ, ओके ओके. हो गए. चलो, लेट्स डू चूज द करेक्ट ऑप्शन. Okay. मैम ये लर्न करने के. Read and learn at the same time. Okay, ma'am. Did बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. मैम डन. मैम डन. Done. ओके. Should I ask you?
ओके Yes, 7 8 ma'am. भी कर लो फिर पूछ रही हूँ. Ma'am. डन बेटा. ओके. मैम वो एफ करो ना, और वो रेडी शर्ट वाले 2 मिनट. ओके ओके. ओके मैम, जाने दो. ओके. Learn these, give two examples. Ma'am, can I? Ma'am, can I लर्न read? करना है बेटा. Ma'am, can I read first? यस बेटा. Yes, You ma'am. want all the following: Seed the outer dispersed covering by of wind. that Dandelion. is Number two. plant Seed dispersed by explosion. sitcot Bean. sitcot Number three. मैम आप मैम आपने मुझे रीड करने का बोला ना तो मालका ने बुशरा रीड कर रही है. हम नंबर लोग वन. नहीं आप रीड करते. करो बेटा. हम नंबर लोग नहीं वन. करते, आप लोग मत दो. नंबर वन. Then बेटा सी tell me your डिस्पर्स. names. I don't know who is present at the meeting. आप names वो बताओ मुझे तो मैं आपका नाम लूंगी. यस. नंबर वन. सी dispersed by wind. Dandelion. Number two. Seed dispersed by Dandelion explosion. and maple. Dandelion and maple दोनों examples पढ़ो बेटा. Yes. Dandelion and maple. Number two. Seed dispersed by explosion. Bean peas. Number three. Features of seeds dispersed by animals. Spines, hook. Number four. Plants that store food in their roots. Carrot, turnip. Number five. Plants that multiply through stem cuttings. Rose hibiscus. Okay. Learn now. Seeds which are dispersed by wind are dandelion and maple. Seeds which are dispersed by explosion are bean and peas. Features of seeds dispersed by animals. एनिमल से जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं उसके फीचर्स स्पाइंस और हुक है. इट इज बिकॉज दे कुड स्टिक विद द फर ऑफ एनिमल्स. ओके. Then plants that store food in their roots are carrot and turnip. Plants that multiply through stem cuttings are rose and hibiscus. Okay. Learn this. I'm giving you 2 minutes.
Ma'am, I have learned Keshwani Fatima. I have learned Balashmita. किसको रीड करना था? कौन बोला था कि आप हमारा नाम नहीं ले रहे? बुशरा। मैम, ये नीदर आज माइक डिस्टर्ब कर रहा है। Who was talking? Bushra was saying that. Read Bushra. यस मैम। मैम कौन सा रीड करने का है यार? आंसर द फॉलोइंग रीड करने का, मैं बाहर थी ना इसमें। व्हाट इज इट हाँ? कॉल्ड? व्हाट इज इट फंक्शन? No, beta, you have to read. Give one word for the following. ओके मैम। मैम इसमें नंबर वन, हाँ ओके। द द आउटर कवरिंग ऑफ, मैं तो कर सकूँ। मैम नंबर वन पर, द आउटर कवरिंग Yes, yes. a seed that protects the baby plant inside it. Seed coat. My husband. The process by which a seed develops a new plant. My information. The process by which seed develops a new plant germination. The process by which Cannot hear you, beta. Your voice is cutting. okay, ma'am. No culture. The outer covering of the seed that processed by baby plant inside its seed coat. The process by which a seed products a new plant germination. The process by which seeds are scattered away from the parent plant. Dispersal. Words of words of a potato that can grow into a new plant and the practice of growing plants on a large scale for food or other purposes agriculture. Very good. Okay. Done? Yes, ma'am. Okay. All the best for tomorrow's exam. All the best, everybody. Have a nice day. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Bye ma'am. bye.